Eigenvalues and eigenvectors of a matrix. Let's define definition. Let A be any square matrix. Square matrix का मतलब है number of rows equal to number of columns. Let us suppose of order n over a number system F. A scalar or constant lambda belongs to field F. वो भी field F का ही एलिमेंट होगा. Is called an eigenvalue of A. Is called an eigenvalue of matrix A if there exists a non-zero n by 1, that is column matrix. We can write column matrix here. N by 1 order column matrix X, which is equal to, let us suppose, x1, x2 up to so on xn, 1, 2 up to so on n by 1, that is column matrix, such that Ax equal to lambda times x. This is the relation of eigenvalues and eigenvectors. Here x is not equal to 0 always. Eigenvector never 0. This lambda, which is called a scalar, belongs to field F, is called the eigenvalue of the matrix A. अब इस eigenvalue lambda को हम कैसे find करें? How to find lambda? Question is how to find lambda, that is eigenvalue of the matrix. Simply from this, here we can solve Ax equal to lambda times x. Here x is not equal to 0. Therefore, we can write Ax minus lambda times x equal to 0. That is A minus lambda times I, x को कॉमन ले लिया, इक्वल टू 0 मैट्रिक्स. राइट हैंड साइड इज द 0 मैट्रिक्स. जैसे ही हमने यहाँ पे x को बाहर किया, दिस इज टू बी नोटेड, बिकॉज जैसे ही हमने x को बाहर किया, यहाँ पे a माइनस लेमडा आना था, लेकिन हमने आइडेंटिटी कर दिया बिकॉज ऑफ दिस इज ए मैट्रिक्स, दिस शुड बी मैट्रिक्स. इसको मैट्रिक्स बनाने के लिए हमने आइडेंटिटी भी उसी ऑर्डर की ले ली जो जिस ऑर्डर का a हमने लिया है. तो दैट्स वाई वी मल्टीप्लाई आइडेंटिटी हियर. a माइनस लेमडा टाइम्स i, दिस इज ए मैट्रिक्स, times x equal to 0 matrix. You can write here is 0 matrix. This is the equation. Hence, x is not equal to 0 means a system of homogeneous linear equations have a non-trivial solution if and only if its coefficient matrix is singular. हमें पता है matrix A is singular when determinant of A must be equal to 0. x तो यहाँ पे 0 होगा नहीं, किसी न किसी को 0 होना पड़ेगा. तो that is determinant of A minus lambda I equals to 0. This is 0. This is not 0. This is null matrix. A minus lambda I determinant equal to 0. We can write here because for non-trivial solution, determinant of this matrix should be 0, or matrix A minus lambda I is singular matrix. This is the main equation where we find lambda. This is determinant of this. We know determinant of any matrix is a real number. This is also a real number. When we calculate and solve this equation,
we find polynomial in lambda. This is characteristic polynomial. We can write characteristic polynomial equation in lambda. सिंपली अगर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2/2 हो, वी फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यू कैन राइट इन द नेक्स्ट पेज. अब हमें मिल चुका है ए माइनस लैम्डा टाइम्स आई डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स. अब देखते हैं हम यहाँ से हाउ टू फाइंड लैम्डा. अगर ए का ऑर्डर 2/2 हो, वी गेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर ए का ऑर्डर 3/3 हो, वी फाइंड क्यूबिक इक्वेशन. अगर ए का ऑर्डर 4/4 हो, we get biquadratic equation. We can write here when order of matrix A is 2/2, we get quadratic equation in lambda. This is also called characteristic polynomial equation lambda. Number 2, when order of matrix A is 3/3, we get cubic equation in lambda. Similarly, for higher order, we find 4/4, that is biquadratic, up to so on. Let us check for any matrix. For example, let A be a matrix of this type 1, 4, 2, 3. Let us take this matrix 2/2 order. Now, we want to find lambda by using this characteristic polynomial equation. So, therefore, first of all, we multiply lambda times I. Identity भी हम उसी ऑर्डर की लेंगे. Identity equal to 1, 0, 0, 1. This implies lambda times I, which is equal to lambda 0, 0, lambda. Subtracting A minus lambda I. This is a matrix. We get 1 minus lambda, 2, 4, 3 minus lambda. That is determinant of A minus lambda I equal to 0 if and only if determinant of 1 minus lambda, 4, 2, 3 minus lambda equal to 0. That is 1 minus lambda times 3 minus lambda minus 2 4s are 8 equal to 0. And after solving it, 1, that is 3 minus lambda minus 3 lambda plus lambda square minus 8 equal to 0. That is lambda square को पहले लिखा. Here is minus 4 lambda minus 8, this minus 5 equal to 0. Here we get this characteristic polynomial equation. This is called a quadratic equation. हम पहले कह चुके हैं नंबर 1 में. when order of matrix A is 2/2, we get quadratic equation. हमें यहाँ पे quadratic equation मिल चुकी है. अब quadratic equation को solve करते हैं by factorizing it and we can solve it. अब ध्यान से देखें. lambda square minus 4 lambda minus 5 equal to 0. Minus 5 middle term splitting minus 5 lambda square minus 5 lambda plus 1 lambda. This becomes minus 4 lambda minus 5 equal to 0. Lambda को common ले लो. Lambda minus 5 plus 1 is taken out. Lambda minus 5 equal to 0. Lambda minus 5, lambda minus 5. Again common. Lambda minus 5 into lambda plus 1 equal to 0. That is lambda minus 5 equal to 0 और lambda plus 1 equal to 0. यहाँ से क्या मिलेगा? lambda equal to 5 और lambda equal to minus 1.
आप किसी को लैम्डा 1 मान लो, किसी को लैम्डा 2. वी गेट लेट लैम्डा 1 इक्वल टू -1, लैम्डा 2 इक्वल टू 5. लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर कॉल्ड आइगन वैल्यूज. इस टाइप से हम आइगन वैल्यूज को निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स में. जैसे 2/2 में हमने निकाल दिया, कोई आप अनदर एग्जांपल से भी ट्राई कर सकते हैं. अब व्हाट इज द मेन रोल ऑफ दीज आइगन वैल्यूज? हम चेक कैसे करें कि हमारी आइगन वैल्यूज जो निकली है दिस इज करेक्ट. अभी हमारे पास लैम्डा 1 इक्वल टू -1 माना हमने, लैम्डा 2 इक्वल टू 5 माना. आप लैम्डा 1 इसको भी मान सकते हैं. लेट लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 विच इज इक्वल टू -1 इंटू 5 विच इज इक्वल टू -5. लैम्डा 1 इंटू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू आइगन वैल्यूज इक्वल टू -5. अब देखते हैं ये डिटर्मिनेंट क्या है मैट्रिक्स का. डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज 1 2 4 3. 3 minus 8 that is -5. Hence product of eigenvalues equal to determinant of A. ये आप इस टाइप से चेक कर सकते हैं. आइगन वैल्यूज निकाल के उसका प्रोडक्ट क्या वो आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए के बराबर आना चाहिए. अगर ये करेक्ट है तो इट मीन्स आवर आइगन वैल्यूज आर करेक्ट. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू नोट दैट प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए. अनदर प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज. Properties of eigenvalues. Number 1, if matrix determinant of matrix A is not equal to 0, that is matrix is non-singular, there exists A inverse, then eigenvalues of A inverse is lambda inverse. दिस इज करेक्ट. कहने का मतलब है आपके पास मैट्रिक्स ए है विद आइगन वैल्यू लैम्डा. अगर इन्वर्स करेंगे तो यहाँ पे भी इन्वर्स हो जाएगा. दिस इज द केस. और सिमिलरली प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, इफ ए बी एनी मैट्रिक्स हैविंग आइगन वैल्यू लैम्डा, ए स्क्वायर हैविंग आइगन वैल्यू लैम्डा स्क्वायर, यू कैन चेक इट. सिमिलरली नंबर थर्ड प्रॉपर्टी, A be any eigenvalue of lambda k times of A matrix having eigenvalue k times of lambda. स्केलर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी हो जाएगा. और एक यहाँ से जनरलाइज केस आ सकता है. A रेज टू पावर m के लिए आइगन वैल्यूज लैम्डा रेज टू पावर m होगा. m is any number 1 2 3 up to so on. Let us check by taking one example. Let A be a matrix 0 1 1 1. This is the square matrix. Simplest case. A square. A square is A into A. You can check here. 0 1 1 1. 0 1 1 1. First row, first column as usual. This into this plus this into this. That is 1. First row, first column. First row, second column. This into this plus this into this. That is this. Second row, first column. This into this plus this into that is 1 here. Second row, second column. This into this plus this into that is 2. Once we can check. First row, first column. This into this plus this into this. That is 1. First row, second column. This into this into this. Second row, first column. This into this, that is second row, second column, that is 2 here. A square equal to this matrix. Now, what is the eigenvalue of A and what is the eigenvalue of A square? Now, we can check. Eigenvalue of this
that is a minus lambda I determinant equal to 0. We can write this implies minus lambda 1 1 1 minus lambda determinant equal to 0. We can solve here. Minus lambda times 1 minus lambda minus 1 equal to 0. Minus lambda plus lambda square minus 1 equal to 0. Lambda square minus lambda minus 1 equal to 0. This is the quadratic equation for it. Calculation for matrix A versus A square. Quadratic equation for A becomes lambda square minus lambda minus 1 equal to 0. Here is lambda square minus 3 lambda plus 1 equal to 0. Now let's derive lambda 1 lambda 2 here. Lambda equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. Here is lambda equal to minus b plus minus square root b square minus 4ac upon 2a. Solving 1 plus minus b square minus 4ac, that is positive here, under root 5 upon 2, that is lambda. Here is lambda equal to 3 plus minus under root 5 upon 2. Let us assume this is lambda for a square, this is lambda for a. हमने ये देखना है a के लिए आपके पास लैम्डा, a के लिए आइगन वैल्यू लैम्डा है, a स्क्वायर के लिए लैम्डा स्क्वायर होना चाहिए, इट मीन्स इसका स्क्वायर होना चाहिए. तो लेट अस चेक. लैम्डा स्क्वायर इज व्हाट? 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2 का स्क्वायर, ये इतना आना चाहिए. वी कैन चेक हियर. 1 अपॉन 2 डिनोमिनेटर इज 4, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 4, a स्क्वायर दैट इज 1 प्लस माइनस रूट 5 स्क्वायर दैट इज 5 प्लस 2ab 2 under root 5, which is equal to 1 upon 4. First taken positive, we find 1 plus 5, 6 plus 2 under root 5 taken पॉजिटिव लेने पे हमें पे ये आएगा, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, 2 इज टेकन कॉमन, 3 प्लस अंडर रूट 5, 2 कैंसल, वी फाइंड 1 बाई 2, 3 प्लस अंडर रूट 5 पॉजिटिव के लिए. सिमिलरली यहाँ पे नहीं होगा ये प्लस माइनस, यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा. जब आप पॉजिटिव लेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा. तो here is the case, this is positive here. We find 6 minus 2 under root 5. That is we can take here is 3 minus this. तो जब आप इसको मिलाओगे तो we find this result. यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा. तो जब आप सॉल्व करोगे, that is lambda square equal to 1 plus minus under root 5 upon 2 square, which is equal to 1 upon 4. 1 plus minus under root 5 का होल स्क्वायर, which is equal to 1 upon 4. 1 a square plus b square, that is b square, क्योंकि प्लस माइनस का जो स्क्वायर है दैट इज पॉजिटिव ऑलवेज. प्लस माइनस यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आएगा प्लस माइनस, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ दिस, एंड वी कैन सॉल्व एंड वी फाइंड द सेम रिजल्ट. सिमिलरली a का लैम्डा हो तो a स्क्वायर का आपके पास a रेज़ टू पावर m का आपके पास इतना होगा.